you were on with Trinamool Congress for many years. तो उसको छोड़कर why you join in BJP? You look at the population of West Bengal, for many years we've all lived together. But what is happening now, the illegal immigrants are being brought in. And the DNA of West Bengal is changing. That when a son of the soil picks a different color to empower India and empower the youth, I become an outsider. Leender Pace is a great sportsman, but he wants to fulfill his personal agenda. That's why he joined with BJP. First, get to know my personal agenda. It's the Tiranga. It's the people. If they know my personal agenda, they wouldn't call me an outsider. So sir, কেমন আছেন? নমস্কার, আমি একদম ভালো আছি। আপনি কেমন? দারুণ দারুণ দারুণ। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে আপনার মতো একজন মানুষের সামনে বসে থাকা গায়ে এখনো কাটা দিচ্ছে, বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমরা এই পডকাস্টে আছি। আমার অনার আছে কি আমি এখানে আপনার पॉडकास्ट আছে एंड 40 इयर्स है देश के लिए भाई बहनों के लिए खेले। सबसे बड़ी बात है कि जब देश के लिए खेलते हैं ना, वो तिरंगा जो दिल पे होते हैं ना, बंगाल हो या गुजरात हो या गोवा हो या तमिलनाडु हो या पंजाब हो या तेलंगाना हो या आंध्र हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जी सर। सर आप बोल रहे थे कि योर चाइल्डहुड वाज स्पेन इन कोलकाता। मैदान से आपका जो ये खेलने का जो जर्नी ये शुरुआत हुआ था, तो थोड़ा बताइए कैसा था वो दिन? कलकत्ता 80s में बहुत बढ़िया था, 70s में और भी बढ़िया था। जो बंगाल का जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, लिटरेसी है, बंगाल का नॉलेज बहुत है। मगर अभी जो देख रहे, द वे वी आर लुकिंग एट बंगाल टुडे, in the last 15 years we've deteriorated a lot. If you look at the economy of Bengal, you look at the education in West Bengal, you look at the teachers, the nurses, the doctors, you look at entrepreneurship, new jobs, IT, AI. Where is it? Most of our knowledge and the brain drain that's happening has all left the state. They're leaving the metro of Kolkata and going to Bombay, Delhi, Patna, Hyderabad, let alone going out of the country. So this brain drain that is happening, where the youth are leaving the state to further and better their education, the youth are leaving the state to better their job opportunities, to earn a better living. That is happening tremendously. The same job in Kolkata will get you 25,000 or 35,000 rupees. And in Bombay or Delhi or in Chennai or in Bangalore, that will get you 1,25,000 rupees per month. So I feel very sad with the way that the economy of Bengal is just deteriorating year after year. When you look at the rest of India, the economy is rising. So I really feel, देखो मैं तो डबल्स खेल चुका हूँ काफ़ी साल से, और काफ़ी डबल्स टीम और डबल्स पार्टनरशिप बना चुका हूँ। और पश्चिम बंगाल में डबल इंजन चाहिए, जहाँ स्टेट का सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, सर तब पश्चिम बंगाल राइज होगा। सर ये बताइए कि you were on with Trinamool Congress for many years, तो उसको छोड़ करके बीजेपी की अब ज्वाइन किया है अभी। So what is the reason for that? Why you join in BJP? So it's very clear, right? When Mamta Didi was the sports minister, she sanctioned for my tennis. She helped me. So I have respect for her for that. I've been born and brought up in Kolkata. My great-great-grandfather, Michael Madhusudhan Dotto, is a Bengali poet. When TMC went to Goa, so I'm Bengali, Hindu, Goan, Christian. So I have a unique blend of Hindu, Christian.
But that is what Hindustan is about. Yes. We are all inclusive, and especially in the state of Bengal, where people from different castes can live together. People from different religions can live together. People from different communities can live together. You look at the population of West Bengal, for many, many years, we've all lived together. But what is happening now is that the real outsiders, the illegal immigrants, are being brought in. And the DNA of West Bengal is changing. The DNA of West Bengal is changing so much that when a son of the soil picks a different color or a different party to empower India and empower the youth, I become an outsider. Yeah, I also It want is to know your not reaction. only laughable, but it is disgusting. I also want to know your reaction that TMS is now telling that you are the outsider. So what you want to say about that? You know, there's a big difference between politics and governance. Politics on one side, I've realized that people talk a lot. People lie a lot. There's a lot of smoke and mirrors. Data, facts, things are all getting misconstrued. The brain mapping of the public is with a lot of lies and a lot of untruths, promises that are not kept, a lot of speeches that are not followed through, all to get position and politics, get a seat. I don't need a seat. I've earned it. But in that, when Modi ji summoned me to Delhi, and I went to Delhi the very next morning, our Prime Minister of India had left Delhi at 5:30 in the morning for Assam. At his age, he worked for 16 hours in Assam, came back to Delhi, and at 9:45 at night, he welcomed me, he met me in his house. He was fresh, he was energetic, and he had that charisma. So when you look at একটা মানুষ जो আছে না, অত জোশ আছে for the people and for the Tiranga, for the youth of India. আর ওটা মানুষ যেরকম একটা বাঙালি ছেলে এর সঙ্গে কথা হয়ে, he told me that the youth and sports is where I want you to focus. The Commonwealth Games, the Olympic Games is where I want you to focus. जितना ताकत हमारे हाथ में है, मैं आपको देता हूं देश के लिए. आपने 40 साल के लिए देश के लिए किए, दुनिया घूम के देश का नाम रोशन किए, और अभी देश वालों को ओलंपिक चैंपियन बनाने का है, देश वालों को इंडियन चैंपियन बनाने का है. तो you know, when you're sitting in front of a prime minister who's putting in so many hours for the country, for the people, and he yet has the grace and the character to sit in front of you and empower you to do for the country, then you feel a sense of responsibility. You feel a sense of honor. You feel a sense of patriotism that even after 40 years of working, if I did nothing else, and I enjoyed my time with my family, I enjoyed my time playing my sport, I traveled the world and watched Wimbledon, I watched the French Open and went to the Olympics peacefully, no one would say anything. But I'm risking myself to get into governance for the people, for Bengal, my Bengal. My Bengal, which is inclusive of Hindu, Muslim, Christian, Sikh, and every other denomination there is. The deterioration of Bengal over the last 30, 40 years is so significant. And especially in the last 5 to 8 years. Where is the opportunity for jobs for our youth? Bengal is becoming
an old age retirement place? Where is the security for our women? Where is the law and order? Where is the protection of our children and our women? কোথায় আছে? I very strongly believe that when Prime Minister Modi and the BJP can run the state of Bengal as they're running all of India, that is when the economy of Bengal will rise. That is when education will get better. That is when sport, my own business, my own profession, বাবার সঙ্গে মোহনবাগানে খেলেছে, আপনি মোহনবাগান ছেলে আছে, হ্যাঁ, ময়দানে স্টেডিয়াম যে আছে না, ওখানে বড় হয়ে গেছে, ওখানে শিখেছে যেরকম তিরঙ্গার সঙ্গে আমি খেলবো। So TMC is complaining कि Leander Pace is a great sportsman, but he wants to fulfill his personal agenda. That's why he joined with BJP. What do you want to tell about that? First, get to know my personal agenda. It's the Tiranga. Always has been, always will be. Get to know my personal agenda. It's the people. If they know my personal agenda, they wouldn't call me an outsider. That was laughable. If they knew my personal agenda, don't you think that my own state government would empower me to do something nationwide? कोথায়? So, जब मैं लोग को कहते थे कि मैं विंबलडन जीत चुकेंगे, मैं विंबलडन जीतेंगे, तो लोग औकात पूछते थे, पहला खेल के दिखाओ, विंबलडन पहुंच के दिखाओ। तब पहले बार जीते 1919 पे, बोले दिस इज अ फ्लूक, दोबारा करके दिखाओ। तब दोबारा भी जीता महेश के साथ, बोले ये तो डबल्स में है, फिर से करो। 3 बार जीते, 4 बार जीते, नवराटिलोवा के साथ जीते, मार्टिना हिंगिस के साथ जीते। अभी ये जो বাঙালি ছেলে जो আছে না, পার্ক স্ট্রিটে গলি ক্রিকেট গলি ফুটবল খেলেছে, এখন 6টা विंबलडन আছে बारी ट्रॉफी। तो जो इंसान के अंदर जोश है ना करने के लिए, थोड़ा समय लगेंगे लोगों को कि इसका औकात क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो मैं भी लड़ेंगे देश वालों के लिए, अलग रूप में। पहला मैदान पे लड़ते थे, अभी गवर्नेंस में, पॉलिटिकल मैदान पे, गवर्नेंस मैदान पे। पॉलिटिक्स तो खेलना पड़ेगा, मगर गवर्नेंस, बहुत फर्क होता है। ये दो चीज, ये दो शब्द जो होते हैं, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, बहुत फर्क है इसमें। काफी लोग को कुर्सी चाहिए, काफी लोग को पैसा चाहिए, काफी लोग को औकात चाहिए। मैं खून पसीना से ये औकात कमा चुका हूं। जिस तरह से मैंने 7 ओलंपिक्स खेले, जब इंडिया या जब ओलंपिक्स इंडिया पे आएंगे, देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे देश वालों और मेडल जीत के आएंगे, 10, 15, 20 मेडल। जब मैं खेलते थे, बच बच के 1 मेडल वापस लाते थे हम लोग, वो भी टीम स्पोर्ट पे, हॉकी पे। मेरा मेडल जीतने के बाद तब शूटिंग पे, बैडमिंटन पे, अलग अलग स्पोर्ट्स पे तब मेडल जीत चुके थे। मगर मेरा मेडल, पहला ओलंपिक मेडल थे 44 इयर्स के बाद। इस तरह से पॉलिटिक्स में ये जो कैरेक्टर है, क्लास है, डिग्निटी है, गवर्नेंस है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, उसका प्यार के साथ, उसका ताकत के साथ, उसका देश के लिए और देश वालों के लिए इतना जोश के साथ, अब देखेंगे लिएंडर पेस क्या करना चाहते हैं देश के लिए।